Good morning. Welcome to Amazon Live. I am Lakshita Singh, Assistant Marketing Manager at Mama Nourish, and with me I have Yash Parashar, the founder and CEO of Mama Nourish. Hi Yash, how do you feel? Thank you, Lakshita. It's a great opportunity and a pleasure to be directly interacting with our consumers through Amazon Live today. I think a great opportunity. Thanks for having us. So, Yash, let's start at the very beginning. You come from the corporate world. How did this entrepreneurial journey begin? So, interesting question. In fact, while in my heart, I think I had always wanted to be an entrepreneur. But as they say, after an amazing corporate stint, it is very difficult to really come out and all jump all through. In fact, I or people around me had also not really thought that it's going to turn in this way. I'm glad that I found my passion as well as a problem worth solving nowhere else but inside my own home in my mother's kitchen, and that is it. The result is Mama Nourish, a mission where we are trying to recreate traditional recipes from across the country into modern, convenient format. So I'm glad that happened, and just an amazing journey. Nothing more beautiful I could have ever imagined. So, let me ask you, what exactly is Mama Nourish and what is the Laddubar? So I think this is one of the most loved questions that I really like to answer. Mama Nourish is a mission. Mama Nourish is a resolve to rediscover India's nutritional treasure. We as a generation, in fact, we Indians have been truly blessed to have a beautiful and an amazing, extraordinary culinary heritage, and which has come to us through the great grandmothers, to our grandmothers, generation after generation, to our mothers, and then it reached us. But unfortunately, for the generation that we are, I think the grandma's legacy is endangered. And when I say so, it is primarily for some basic reasons. In fact, this was an insight that happened in our home at when we ourselves felt it that whatever my mother was, she had learned it from her mother. We were not able to learn it, and we were not able to recreate it. I think it began from there. We went on to do a survey. Today, there's an interesting fact: 88% of Indians, and I'm talking about the latest generation, which the modern working professionals primarily who have just got married over the last 5 years and are living in the metro cities. 88% of them do acknowledge that they will not be able to pass on the baton of this great legacy that we have inherited. And if you deep down further into it, there are three primary reasons why this legacy is endangered or grandma's legacy is endangered. First and foremost reason is the knowledge transfer in the kitchen, which was happening, is completely collapsed. So we as a generation are not learning from our mothers or grandmothers the way previous generations did. Second, I think the fast-paced lifestyle that we all come from has completely put us in a frame where we don't have energy or time to really cook. So we don't get to cook so much. And third, I think in our fast-paced lifestyle, we are so in a rush that we end up picking up whatever is available. Now, and on top of it, the Indian food has not adapted. So primarily three reasons: the knowledge transfer collapsed, then we got too busy getting no time to cook, and third reason being that the food Indian heritage food never adapted to modern convenient formats. I think this resolve or this mission to bring back those nutritious recipes into modern convenient formats or bridge the gap between our traditional rich culinary heritage and the fast-paced modern lifestyle is what Mama Nourish is. The outcome of this mission, the first outcome, is what we call Laddubar. In fact, when I go into that question, what is Laddubar, Lakshita, I would rather ask you a question. When did you last have a laddu that your dadi or nani prepared? Or, in fact, this question is also to our viewers. When was the last time that you had a laddu that your dadi, nani, or mother prepared at home? I'm talking about homemade laddus and not laddus prepared uh, at a halwai shop, not bought ones. I must be very honest with you, I wasn't expecting the question. And secondly, I really cannot exactly remember when was the last time, but I would still say it was at least good 10, 12 years ago. And maybe when I was 10 years old, and after that, I don't remember my nani or dadi making any homemade laddus for me. Exactly. So, yeah. So I think exactly that is what we are trying to solve. So this laddu bars that you see on the table today, or the products of Mama Naresh, the laddu bar is exactly same laddu which your dadi or nani gave to you when you were 10 years old, or what our viewers had from their grandmothers or their mothers. This is the same, exactly same laddu which you took to hostels. It is the same laddu which you traveled along in your train. It is the same exact laddu which
was gifted in barter whenever we used to go to our nanny house and we used to bring back a box of pinni or laddus. Now, when I say so, there are three absolute promises that we make in any of our laddu bar range. The first promise is that every recipe or every product that we have here comes from a real grandmother from a different part of the country. So when I say so, for example, the dry fruit instant energy laddu bar comes from Usha ji, or methi laddu bar that we have is a recipe that we have learned from Mrs. Suman Dhamani, popularly known as Apli Aji. And then we have a Kamarkas laddu bar, which is very famous social memory product in the Punjab and the northern belts of India. And that comes from Mrs. Saroj Madanji. And we are so blessed that we learned these recipes from them and then converted. The second promise, so other than the first promise of each recipe being really authentic and coming from a real grandmother, the second promise that we make is even more amazing, which is that each of these bars are made up of only ingredients from a grandmother's kitchen. Now, that is a tall promise to make, and we have really worked very, very hard to ensure that is true. So, basically, the promise that we are making on all laddu bars is we don't put anything that your grandma would not have put in the bars or in their laddus. So, आप वही exactly same लड्डू खा रहे हैं. यश, जब आप बोल रहे हैं कि exactly same लड्डू, exactly same ingredients, can you tell us what these ingredients are? Definitely. So I think let me take, for example, take one of the examples of dry fruit instant energy laddu bar. This instant energy laddu bar is made up of 74% dry fruits. When I say dry fruits, these are almonds, these are pistachios, these are walnuts, these are dates, these are sesame seeds. These are also the the pumpkin seeds that go into making of this. Other than that, we use only whole wheat flour or whole grain flour to making it, which is only limited to 12% of the constituent. We add only a little amount of jaggery only in this dry fruit instant energy laddu bar. When we say jaggery, it is limited to 2 grams per bar, and then we have certain amount of cow ghee only used to roast the Whole mixture. the mixture of the whole grain, and exactly the way your dadi did. Now, one more aspect when we were preparing it is we have to make these foods adapted to our modern lifestyle as well, and that is where the promise of no added sugar comes in. I think when these laddus went out from grandma's kitchen into Alwai shop, they had been really too generous to add a lot of refined sugars and a lot of ghee, sometimes vegetable oils also. So we have solved that problem as well. So we have kept, so each single bar of Namanarish laddu bars has only cow ghee limited to half a teaspoon, which is less than 2 grams per bar. And when we add, so basically jaggery is only added in two variants, which is the dry fruit instant energy laddu bar and methi laddu bar, and that is also limited to less than 2 grams per bar. So we have tried to be that cautious in terms of the dry fruit instant energy laddu bar. Similarly, when I switch to the wholesome millet laddu bar, the flour basically changes. It comes from a recipe which was very very popular in the Deccan region, and in fact the southern part of the country as well. It is gluten free, and it has made up of ragi or finger millets and pearl millets bajra, very rich in calcium and iron. Both these grains are really good, again very high in fiber. So that's what makes the wholesome millet laddu bars. They're one of the healthiest products that we would ever find on earth. That's what I really claim out and shout out loud. Happy to say that, because it has evolved over generations and generations, and you'll find it very difficult to find a food better than this. And in fact, the wholesome millet laddu bars have up to 77% of dry fruits alone. I think it will also be interesting to, if I were to speak for whom one these products are, before I go into the other two categories, which is basically a whole new group of people that they cater to, Gond and Methi. I would like to double down on for whom is dry fruit instant laddu bar, for whom is the wholesome millet laddu bar. So interestingly, the laddu bars or dry fruit instant energy laddu bar is loved by one and everyone. When I say one and everyone, it is from a 3-year-old to a 100-year-old in the house. Anybody loves it. And these are primarily today bought by working professionals and kept in their office drawers to for their hunger pangs in office. So your 11 a.m. ki choti bhook and your 4 p.m. choti bhook is when you end up having a very nutritious handful of dry fruits in form of a bar. And you, when you have them, you are actually having something which is a source of protein, which is a source of calcium, which is a source of uh, iron, and also is high in fiber. So you have basically just nourished yourself in that break, and then you're satiated for quite a time, and then you can again resume your work with full productivity.
Second, it is also loved by kids, and that is an amazing discovery that we are doing with our customers. They are buying it for their kids, and it is a phenomenal substitute or an chocolate alternative. So today, chocolates are filled with sugars that they basically make our kids addicted. In fact, I have a 3-year-old young one who loves Laddubar, and he grabs it and has it, and fond of calling it a chocolate. I don't mind it. My like his mother and me, we are very blessed. We feel that we have nourished him. He has at least had a handful of dry fruit we would have taken a long era to make him have. So that's very interesting to have see him have it. So beautiful chocolate replacement. We also recently introduced a small format of dry fruit instant energy laddu bar, which is called a minis. These minis are just 8 gram, 30 calories only. 30 calories only. Yes, so one bite is just 30 calories. One bar which I was speaking about was only 150 calories high in fiber. और ये छोटी भूख के लिए सो दिस इज सच एन अमेजिंग थिंग कि आपको जो खाना खाने के बाद जो तलब आती है मीठे की, ये आपको छोटा सा लड्डू बाइट लेना है, एक आपको खाना और एक अपने पड़ोसी को या दोस्त को देना है, शेयर करना है. सो यू शेयर दिस मिठास एंड so you can share it with mithas and share the other one with your colleague. I think that is how it is positioned, and people are loving it. You'll be interesting to know some people have discovered it in their office and then love to take pictures with it. They are finding what better way than to convert even your sweet craving into a healthy opportunity, right, just to have a dry fruits. Even for the kids part which I was speaking, बच्चे लोगों को सब चीज टेस्टी पसंद होती है और थोड़ा ग्लैमरस भी आज के बच्चे होते हैं. So my kid even 3 years old, he loves कि उसको कोई शेक पिला दे या so interestingly chocolate shake या आपको बिस्किट शेक्स खाने की जो पिलाने की जगह पर मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ, और इनफैक्ट हम भी अपने घर पे फॉलो करते हैं, एंड मेनी ऑफ आवर customers have done it for their kids, which is what they do is they take one dry fruit instant energy laddu bar, they put it in the blender with a cup of milk, they blend it, and your laddu bar shake is ready, and the kid loves it like anything. And what basically you've given him is 2 dates, a handful of dry fruits, and with some milk, and so it is such an amazing nourishment for the kid. And in fact, why not you can have it. Well, if you're rushing to your breakfast and you don't know what to do, you can just put the 2 of them in a blender and blend it. आपने किचन के इंग्रेडिएंट से अपना एक शेक बना लिया, which would have taken some long time to make. Second is also a beautiful pudding. So basically again doing the same thing, but then this time pouring it into a pan and heating it up, and your pudding is ready. So आपने dry fruit खीर बना ली in minutes, and that is the beauty or ease that dry fruit instant energy laddu bar brings. Well, that's lovely to know that there's so much innovation happening with such a simple product and then the history of it behind, and it's just lovely to know. So you told us about the dry fruit laddu bar and the millet laddu bar. Now, I am a 24-year-old working professional and I am a health freak. For me, it really matters to me कि मैं कितने कैलोरीज मेरे बॉडी में डाल रही हूँ और मैं क्या कंज्यूम कर रही हूँ, और मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है. तो आप मुझे कौन सा लड्डू बार रेकमेंड करोगे? Now that you immediately said, for me you are a health freak, and very nicely I would really, that is a respected word in today's being very health conscious. अगर आप बिल्कुल शुगर नहीं लेते हैं, यानी अगर आप if you are completely void of sugars, I think the most healthiest bar that we have, and in fact the most healthiest snack that you can pick up is wholesome millet laddu bars. And wholesome millet laddu bar is made up of just and just 2 dates. That is the only sweetener they have. In fact, ये 60% कम sweet है than natural dates. Only 2 dates. Only 2 dates in a bar. Okay. And then so you can imagine जब वो पूरा बार बन जाता है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट भी 77% ड्राई फ्रूट्स आप ले लेते हैं और दो डेट्स होते हैं, तो उसके बाद वो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट हैविंग ड्राई फ्रूट्स एंड 2 dates, and they are 60% less sugary than a natural date also. So basically, what better snack than you can opt for? It is also gluten free, by the way. Okay, that's So, lovely. And Because recently a lot of people are coming up with gluten allergy, so it's good to know that there's a product even for people who have a gluten allergy or are just not consuming gluten in their diet. Correct. Next, I think is a whole family of I'll say bar which was also the original insight. तो हम लोगों का जो कंपनी का origin हुआ था, जो पहला insight था, that came from कि गोंद लड्डू कैसे बने. तो गोंद लड्डू हम लोग शायद ये इंसाइट ही वहाँ से आया था कि माय वाइफ अपूर्वा वाज नॉट एबल टू मेक गोंद लड्डू. उससे गोंद हमको ये समझ में आया कि हमसे ना हो पाएगा हमसे ये लड्डू नहीं बन पाएंगे. तो वहाँ से शायद शुरुआत हुई कि हम गोंद लड्डू पे जाएंगे और मेथी लड्डू बनेंगे. हम लोगों ने हिस्ट्री में रिसर्च किया. यू विल बी सरप्राइज्ड कि इंडिया के मैप में अगर आप जाके देखेंगे और गोंद लड्डू की हिस्ट्री में अंदर जाएंगे,
तो 4th century BC, मतलब लगभग 2,500 से 3,000 साल पहले से इसकी डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं जहाँ पे गोंद लड्डू का प्रयोग घर में जब भी कोई न्यू मदर बनती है तो उसके लिए किया जा रहा है, एंड नॉट जस्ट इन एनी वन पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी एक पार्ट में नहीं। नॉर्थ में इट इज इन इंडो गैंगटिक प्लेन, राजस्थान में, in Maharashtra it is known as Dikache Laddu, in Gujarat Gundar Laddus, Thumba Jingru in the southern part of the country. So there are so different names but the same product, and various grandmothers generation after generation ही आया जा रहा है. But ये गोंद होता क्या है? So very interesting question again, and गोंद is a resin. It is a gum of an acacia और बबूल के पेड़ का कीकड़ के पेड़ से निकलने वाला, it is a resin. Interestingly, it is very high. So out of 100 gram of resin, technically if I go into nutritional profile, it has 85.5 grams of just soluble fiber. So you can imagine that is the first thing. It has about 1000 milligrams of magnesium, and it is also rich in potassium. So these are the two basic ingredients that it brings in. Now ये जो गोंद लड्डू हैं, ये गोंद लड्डू जैसे मैंने बोला कि ये इंडिया की हेरिटेज में इतने इनग्रेन्ड थे कि इनको नई माँ का हक बोलते हैं. सो बेसिकली इनसे व्हेन समबडी यूज्ड टू बिकम अ न्यू मदर, उनका हक है कि उनको गोंद के लड्डू मिलने चाहिए फ्रॉम देयर मदर और फ्रॉम देयर ग्रैंडमदर और इवन फ्रॉम देयर इन-लॉज. So that is how this beautiful culture has been developed. Now if I go into ingredients and why is it so nutritious, so these are made up of again up to 60-65% of dry fruits and then some amazing superfoods. So it is made out of the almonds, pistachios, cashews. Then it also has you said gond. So gond in a very particular way, the way dadis had been first roasting them in absolute cow ghee, and we also by the way use only cow ghee when we make any of these all bars. The laddu bars. All the laddu bars. Then it also has a specific seed, यानी खसखस या poppy seeds बोलते हैं. It is an amazing superfood which has been part of Indian culture. Musk melon seed, खरबूजे की बीज या खरबूजे की मींग जिसको बोलते हैं, वो इसके अंदर है. Then there are spices like cumin जो इसके अंदर डाला जाता है. ये सब के ये जो आइटम्स है जो मैंने जितने भी आपको बताए, चाहे वो ड्राई फ्रूट या डेट्स है, चाहे आलमंड्स है, चाहे वो गूंद है, ये नेचुरल लैक्टिकोस है. साइंटिफिक स्टडीज प्रूव दैट they help in increasing milk supply of a new mother. They also provide the essential nutrients. So for example, our Gond Laddubar and Methi Laddubar both are source of calcium also, they are source of protein also, they are also source of iron. यही तीन चीजें की गोली शायद सारे डाइटिशियंस और डॉक्टर्स पूरे जर्नी में मदर उठ के देते हैं. So these are so rich. In fact, these are also dietitian approved, and chief dietitians of national chain of hospitals are already recommending it in diet charts of the new mothers. अब गोंद लड्डू की बात करें कि लड्डू बार की बात करें? मैं अभी यहाँ गोंद लड्डू की बात कर रहा हूँ. In fact, the dietitians really recommend even dry fruit, instant energy, and also millet for the pregnancy journey, and for post delivery or postpartum recovery के लिए they recommend the gond and methi. Okay. So methi again is one of these amazing ingredients. So the more I read, I get fascinated. हिस्ट्री में जाएंगे तो सबसे पुराने बीज जो इंसान ने खाने शुरू किए लगभग 4,000 साल पहले भी, वो एक तो तिल था, जो हम लोग सबसे पहले तिल के लड्डू बने थे. इनफैक्ट वो मेडिसिन था पहले. उसके बाद जो मेथी होता है, वो मेथी के भी देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स. मेथी हैज बीन नोन और साइंटिफिकली proven to benefit in 3 or 4 very amazing ways. First, it reduces blood sugars. So in gestation diabetes, it is really good to have something in methi as a part of your diet. Second, so methi laddu bars have it, and ये मेथी डॉक्टर के बताने से पहले हमारे कल्चर में पहले इंग्रेडिएंट था. दीकाचे लड्डू आर सो कॉमन, एंड इवन टुडे आप जाएंगे किसी शॉप में भी तो मेथी के लड्डू आपको आसानी से महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत आसानी से मिल जाएंगे. So methi also helps reduce the cholesterol in body, and they're like if you are having up to 10 grams of methi a day over a period of 30 days, so that can result in approximately a single digit or 9 to 10% decrease in your bad cholesterol. So these are scientific papers published on it, and that's what makes us talk about it and be really happy. So Laddu bar is not just about blindly believing in कि हमारे ancestors knew the best. Of course they knew, because it has evolved over 5,000 years. They have seen the benefit out of it. I think as intelligent or as I'll say intelligent beings who are very cautious, want to read nutrients, we do that check. We do go into the lab and see कि really will a doctor approve of it, will a dietitian approve of it, and that is how these bars come into being. For specifically use cases of gond and methi, जब कोई नई मदर बनती हैं तो यूजुअली हंगर पैंग्स आर so frequent. Now the reason is
आप जब when you're one being, आपका एक कैलोरी इंटेक होता है which is approximately to 2100 कैलोरीज के करीब का इंटेक होता है आपका. बट जब आप when you're feeding, जब आप बच्चा आपके ऊपर फीड कर रहा होता है तो कैलोरी इंटेक लगभग 500 कैलोरीज तक बढ़ जाता है. सो 2400 टू 2500 कैलोरीज का इंटेक आपका बॉडी इज बर्निंग प्रोड्यूसिंग मिल्क, एंड हेंस आपको भी नरिशमेंट ज़्यादा चाहिए और बेबी तक भी नरिशमेंट पहुंचना चाहिए. तो उस समय जब रात को भूख लगती है, जब आप उठ के कुछ बनाने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता है क्योंकि बेबी क्राई कर रहा होता है, आपको अपनी केयर आपके भी. सो मदर गोज थ्रू enormous amount of hormonal changes also. So all these bars are, you should just keep it in a bedside table if you're hungry at mid of the night. बच्चा आपको पूरा जगा के रखा है. I think those are times when goond and methi laddu bars are supposed to be taken, and they can be carried in your purse, on the go, on the travel. I think that's how it is. That's lovely to know कि सारे के सारे लड्डू बार में आपने इतना थॉट डाला है, इतनी हिस्ट्री, इतनी रिसर्च, इतनी ज़्यादा क्लिनिकल क्लेम्स हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करे हैं. इवन डाइटिशियंस आर recommending the laddu bar. That's amazing to know. Yash, I've noticed that one of the claims is there are no preservatives. Correct. And it is also something that comes in a package. And modern day में हमारी एक assumption ये होती है कि जो चीज़ पैकेट में है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है. तो आपने इस चीज को कैसे सॉल्व किया? So I think a brilliant question, and this is one of the question which हमारे consumers भी हमको ये बात पूछते हैं कि ये लड्डू मतलब लड्डू बार की शेल्फ लाइफ क्या है और आप इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं कि पैकेट में खराब नहीं होता. So उसके दो तीन मतलब I'll say three very clear answer. At the top of it, पहला, हम लोग as a company, as we said, we have a big रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, क्योंकि हम दादी माँ के खाने को वापस रिक्रिएट कर रहे हैं. तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है और हम उसके लिए वी पुट इन ऑल द एफर्ट. तो फर्स्ट प्रॉमिस दैट वी से कि हमारे सारे बार्स एज आई सेड आर एब्सोल्युटली विदाउट प्रिजर्वेटिव. कुछ भी नहीं, मतलब दे आर जस्ट मेड ऑफ किचन इंग्रेडिएंट. जो आप किचन में डालते हैं वो हम डालते हैं. नाउ हाउ डू वी देन मेक बेटर शेल्फ लाइफ? तो शेल्फ लाइफ के लिए सबसे पहले हम लोग नॉन इन्वेजिव वे, यानी ऐसे तरीके, ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनसे आप बिना खाने को टच किए आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, खाना खराब क्यों होता है? जनरली आई थिंक इफ वी गो इनटू दोस प्रिंसिपल्स इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. खाना तीन मुख्य कारणों से खराब होता है, कोई भी चीज खराब होती है. सबसे पहले माइक्रोब्स, यानी अगर वातावरण में जितने बैक्टीरियाज या फंगी है आसपास एनवायरनमेंट, वो फूड में चला जाता है और उससे खाना स्पॉइल होता है, उसके ऊपर ग्रोथ होने लग जाती है, वो खाना उसको खा के वो खराब करता है. सेकेंड इज ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन के कई सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. और थर्ड होता है मॉइस्चर कंटेंट की अवेलेबिलिटी, जिससे ये चीज़ें एक्सेलरेट हो जाती हैं. हम इन तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट. तो हम पहला मॉइस्चर रिडक्शन पे बहुत फोकस करते हैं. सेकंड, एनवायरनमेंट टेम्परेचर कंट्रोल्ड और एनवायरनमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीजन कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर हम इसको डेवलप करने का प्रयास करते हैं. और तीसरा, जब हम इसको फाइनली सील करते हैं, 4 लेयर पीईटी कोटिंग के अंदर सील हो जाता है. और क्योंकि हमने मॉइस्चर कंटेंट में सिंगल डिजिट रखा होता है, और वैसे भी जो इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ना हम कोई वाटर एडिशन नहीं करते हैं. सो देयर इज नो वाटर एडिशन. ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने का कोई फैक्टर ही नहीं है पूरे प्रोसेस के अंदर. ओनली डिह्यूमिडिफिकेशन फैक्टर्स हैं. तो नेचुरल डेट्स की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, ड्राई फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, रोस्टेड फ्लावर की शेल्फ लाइफ अच्छी होती है. जब आप उनमें से और डीह्यूमिडाइज कर देते हैं उनको, देन वी कैन. एंड फाइनली हमारा कोई एम ही नहीं है कि हम इसको और स्ट्रेच करें. हम आपको फ्रेश ही सर्व करना चाहते हैं, तो हम चाहते भी नहीं कि फर्दर आप उसको स्ट्रेच करें. वी वांट इट टू रोटेट वेरी क्विकली. इनफैक्ट आपके पास मैक्सिमम टाइम पे जब भी लड्डू बाज आएगा वो तीन, मतलब इट इज as fresh as we can really supply. So that's how laddu bars are made, and we ensure through non-invasive technologies. And आगे भी जब भी हम कुछ बनाएंगे तो our promise will be हम non-invasive way of preservation ही इस्तेमाल करेंगे. And what better कि अगर हम प्रेजर्वेटिव नहीं डाले तो दादी माँ का भी प्यार इंटैक्ट रहेगा लड्डू बार में. नहीं, absolutely. I think दादी माँ ने जब कुछ डाला नहीं, कुछ खराब काके खाने में, तो हम अगर हम उनकी हेरिटेज के कुछ पास भी जाना चाहते हैं with all our right intent, I think we have to keep that promise up. And talking about Dadi Ma and Dadi Ma ka pyar, let's come to the mascot. Mascot is adorable. It is really loved by all, and I wanted to know कि आप ये mascot कहाँ से लेके आएंगे दादी माँ को? I think I must first give credit to the design team, but again I'll go back. जब हम लोग इस ब्रांड को विजुअलाइज कर रहे थे, आई थिंक हम लोग एक बहुत बड़ा सपना देख रहे थे कि भारत की इतनी बड़ी विरासत खान पान की है, दादियों से इतना कुछ हमने पाया है. अब उसको अगर आगे लेके अगली जनरेशन तक जाना है, क्योंकि हमसे अगर नहीं हो पाएगा तो उसको ऐसे फॉर्म फैक्टर में कन्वर्ट करना है कि आगे वाली जनरेशन ले सके. तो जो ब्रीफ गया था कि ऐसा क्या पैकेज या ऐसा क्या ब्रांड आइडेंटिटी बनाई जाए जिससे हम उस, मतलब ये इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी हमारे कंधों पे कि भारत की दादियों की रेसिपीज को आपको आगे लेके जाना है. तो हमने ब्रीफ भी ऐसा ही दिया था कि कैन यू मेक समथिंग जो रिप्रेजेंटेटिव हो दादीज का. तो हमारी डिज़ाइन टीम ने इंडिया में अक्रॉस फ्रॉम नॉर्थ इन जम्मू एंड कश्मीर टू द साउथ and from west in Gujarat to
to the northeastern part of the country. बहुत सारे फोटोग्राफ्स दादियों के इकट्ठे किए, अमेजिंगली व्हाट आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, एंड देन दे ट्राई टू पिक अप प्रोमिनेंट फीचर क्या होते हैं, दादी की सबसे प्रोमिनेंट पहचान क्या है. तो तीन इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई. फर्स्ट प्रोमिनेंट थिंग दैट केम आउट वाज a बिंदी ऑन हर फोरहेड, सेकंड हर साड़ी, एंड थर्ड वर ग्रे स्टैंडर्ड हेयर्स एंड अ जूड़ा पीछे. तो इन तीन आइडेंटिटीज के साथ आई थिंक देन ऑल कुडोस टू द डिजाइन टीम, जिन्होंने वो एक जो दादी का पर्सनालिटी होती है वो भी इस मैस्कॉट के अंदर लेकर आए वो. एंड आई एम सो हैप्पी दैट हम, नॉट जस्ट यू, इनफैक्ट हमारे को हमारी पैकेजिंग पे इस मैस्कॉट के ऊपर बहुत प्यार मिला है. अभी रिसेंटली एफैक मार्केटिंग एक्सेलेंस अवार्ड्स में मुंबई में वी वर फॉर्चुनेट कि हमारे स्टार्टअप को बेस्ट पैकेजिंग डिजाइन अवार्ड मिला, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ आवर डिजाइन टीम बीइंग एबल टू डू इट. And this award, you will be like, we were so amazed, we are so young as an organization, and still we got an opportunity to share the dais or the podium with legendary brands which are 50 years old like Fevicol. So I think kudos to the design team and also a lot of love that our consumers have been giving us. अन्यश, मैं जब भी दादी माँ का फोटो देखती हूँ हमारे लड्डू बार पे, मुझे एग्जैक्टली वो याद आता है कि मेरी नानी और दादी कैसे दिखते हैं. एंड वो जो एक वार्म स्माइल है दादी माँ के फेस पे, वो बहुत वार्मिंग है, बहुत वेलकमिंग है. एंड ऑल्सो कुडोज टू दी अटेंशन टू डिटेल कि हर बॉक्स के ऊपर दादी माँ की साड़ी का कलर अलग है, एंड वो हमें डिफ्रेंशिएट करता है कि लड्डू बार भी अलग है, उनका टेस्ट और फ्लेवर भी अलग है. एब्सोल्युटली, आई थिंक यू आर राइट. तो हम लोगों ने, अगर आप बॉक्स को टर्न करेंगे, हमारे वेबसाइट पे भी जाएंगे, तो हर एक दादी की स्टोरी हमारे पैकेट पे लिखी रहती है. चाहे वो उषा जी की स्टोरी हो, चाहे वो सुमन दमानी जी की स्टोरी हो, चाहे वो सरोज जी की स्टोरी हो, हम वो भी आर्टिकुलेट करते हैं फ्रंट ऑफ द पैक पे उनके नाम के साथ. और उसके बाद साथ में ब्लू साड़ी रिप्रेजेंट्स ड्राई फ्रूट इंस्टेंट एंड दी लड्डू बार, द ऑरेंज साड़ी इज होलसम मिलेट, the pink sari is the methi laddu bar, and then the green sari is kamarkas laddu bar. So that's how largely we are trying to differentiate also. So just ताकि आपके लिए आसान रहे, आपको कौन से कलर की साड़ी वाला लड्डू बार चाहिए. That's lovely to know. And talking about दादी माँ, and दादी माँ से एक ही चीज मुझे याद आती है, स्टोरीज, कहानियां जो वो और सुनाती थी हमें. तो आपकी क्या जर्नी रही है, क्या मेमोरेबल मोमेंट्स रहे अभी तक मामा नरिश की जर्नी में जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? So I think let me go to challenges first. Definitely. So ये जर्नी जब शुरू की थी, आई थिंक सुनने में बहुत आसान लगता है कि लड्डू को बार बनाते हैं. शायद शायद हाइंडसाइड में जब हमने भी शुरू किया था तो हमको भी शायद आसान लगा था, बट इट वाज अ ट्रेमेंडसली टॉयलिंग मेंटली एज वेल एज फिजिकली जर्नी में हम लोग. तो आप लोगों को सबको पता होगा लड्डू जनरली घी और शुगर से बनता है और वो हाथ से बना. और आप जैसे ही आप उसको उठा के लेके जाने की कोशिश कीजिए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो टूट जाता है. आप उसको ट्रैवल करने की कोशिश कीजिए. हम एक ऐसा लड्डू बार बनाना चाहते थे, या लड्डू को ऐसे कन्वीनियंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे ताकि उसको हम कहीं पर भी कभी भी लेके जा सकें. तो टेस्ट हमारे थोड़े स्ट्रॉन्ग थे. टेस्ट वाज क्या आप उसको कैच कर सकते हैं, क्या आप उसको पॉकेट में रख के लेके जा सकते हैं, क्या उसको कार में रख के लेके जा सकते हैं, क्या वो मेल्ट हो जाएगा क्या. ये सारे टेस्ट हमारे फैक्टर थे. और दूसरा प्रॉमिस एज आई सेड कि हमको किचन इंग्रेडिएंट सही बनाना था, हमको हेल्दी भी रखना था. तो बहुत सारे बैलेंसिंग एक्ट थे. आई थिंक हम, इफ आई एवर नॉट रॉन्ग, आई थिंक हमने 80 से 90 बार हम लोग फेल हुए. हर दिन ट्रायल, 3 दिन ट्रायल होते थे. मैं अपने ऑफिस ट्रैवल पे गया होता था, माय मदर एट होम वाज ट्राइंग टू डू इट. मेरे को दिन में 5-5 बार फोटोग्राफ्स आते थे, ये ट्राई किया, यहाँ पहुंच गए, और हर बार जाकर हम उसको वो हैंडलिंग वाले आइटम से हैंडलिंग कि ये टूट गया, देखिए हमने कैच किया, ये टूट गया, वैसा करके उसको आई थिंक हमारे दिल को धक्का भी लगता था कि हमने अपना सब कुछ दे दिया इसको. क्या ये कभी सॉल्व भी होगा, क्या लड्डू बार बन सकता है क्या. आई थिंक बट फाइनली स्लोली एंड स्टडीली. एक बार का किस्सा है कि हम लोगों ने छोटे फॉर्मेट में, हमको लगा शायद हम लोग रेसिपी क्रैक कर चुके हैं, अभी 10 किलो का पूरा बैच बनाएंगे तो हम लोग पूरा लड्डू बाज बन जाएंगे. वो 10 किलो का पूरा मटेरियल शायद लड्डू बनने के अलावा किसी काम का बचा नहीं था, तो वी हैड टू गो एंड डिस्ट्रीब्यूट इट. सो यू कैन इमेजिन 10 केजी, आप 5 लोग हो या 3 लोग घर में हो गए, 10 किलो ड्राई फ्रूट्स और डेट्स आपके घर में कढ़ाई में, मतलब इन दैट पका बना हुआ जिसके लड्डू भी बन सकते हैं. सो यस, दो लड्डू लोगों ने एंजॉय किए, बट उससे बाहर नहीं बन रहा था. तो वहां से जर्नी शुरू हुई थी. एंड देन वी आल्सो सॉ after launch a few days when we were completely stocked out. So we have seen both sides of the journey, so that is very exciting. जब लोग अपने बच्चों का फोटो खींचते हैं डांस करते हुए बालकनी में, अपने वो लड्डू बार खा रहे होते हैं, तो इट इज सैटिस्फाइंग कि शायद कुछ तो सही कर रहे हैं. इट्स लवली टू नो कि आपने दोनों साइड्स देखे, जहाँ पे आपके पास इतना सारा लड्डू का मिक्सचर पड़ा हुआ था, एंड ऑन द अदर साइड आप स्टॉक आउट हो रहे थे. इट मस्ट बी अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस. Absolutely, I think roller coaster within the day also. Sometimes Yeah. the moment you get a good order, and then all of a sudden you're on the top of the world. Yeah. And the moment sometimes you have some obstacle and hurdle कि हमारे supplies पे कुछ effect होता है, then you are all of a sudden catching cold. So Yash, how has the customer liked the product?
रिस्पॉन्स कैसा रहा है अभी So I think amazing response. So when I say amazing response, people on Amazon have been really loving us. People are discovering us in their office and posting us on Instagram. They have shot photographs of themselves with a cup of chai and Laddubar mini. They shared with us how their kids loved it, or they have shared how they have included it as part of their postpartum diet. So it is sometimes very amazing. In fact, our WhatsApp has a lot of videos where people have said their kids, यानी उन्होंने अपने बच्चों को खिलाया और वो खा गई. तो आई थिंक दैट इज अ बेटर व्हाट बेटर टेस्ट देन दैट. right. एंड लास्टली यंग जनरेशन इज आल्सो लविंग इट. ये यंग जनरेशन का ट्रेंडी लड्डू है, सो इससे ज़्यादा ट्रेंडी लड्डू कुछ हो नहीं सकता. तो दैट इज समथिंग दैट पीपल हैव लव्ड. एंड नई नई जनरेशन को एक्चुअली बार चाहिए था, या शायद वो बाहर के वेस्टर्न बार्स खा खा के अपने आप को काफी स्पॉइल कर चुके हैं, या आपको फाइन कोई भी हमारे बार लिए बनाएंगे. कन्वीनियंट बन चुका है हाँ वो चीज़, एब्सोल्युटली. हाँ. इनफैक्ट कई लोगों को हम जैसे लड्डू बार भी दिखाते हैं, लड्डू बार वर्ड को पहले प्रोटीन से शुरू करते हैं. प्रोटीन बार है क्या ये? हाँ आई जी. सेड ये एकदम एब्सोल्युटली होलसम बार है. आप ढूंढ के दिखाइए मार्केट में जो इससे ज्यादा होलसम बार होगा, जो केमिकली नहीं प्रोड्यूस हुआ है. सो आई थिंक होलसम में किचन इंग्रेडिएंट से बना हुआ क्लीनेस्ट बार है. सो दैट इज व्हाट लड्डू बार इज. एंड आई थिंक अमेज्ड बाय द लव दैट वी हैव गॉट फ्रॉम आवर कस्टमर्स. एंड फ्यूचर प्लान्स क्या है? आपको इतना प्यार मिला आपके कस्टमर्स से, आप और क्या देने वाले हो? So I think if I see long term and maybe immediate terms, that's what I'll try to answer this. पहला, हमारा सपना तो सिंपल इतना ही है कि दादी माँ के लड्डू हर आदमी हर रोज, या अगर हर रोज नहीं तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन अगर खाता है, और कहीं पर भी कन्वीनियंटली खाता है, आई थिंक तब शायद हम ये जो दादी की रेसिपीज जो इंडेंजर्ड हो रही हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे आ गई हैं, अगर तो हम मानेंगे कि शायद हम उसको कुछ रिवाइव कर पाए. अगर वी इंडियंस और हमारी जनरेशन और आगे वाली जनरेशन भी हफ्ते में 2 बार कम से कम, 2 या 3 बार लड्डू बार्स या ऐसे बार जो दादी की बनी रेसिपीज है वो खाते हैं. तो सेकंड, मोर इम्पोर्टेंटली, इफ आई कम टू इमीडिएट टर्म्स, अभी हमने कुछ रिसेंटली ऑफलाइन में हमारा एक प्रोडक्ट था लड्डू बार मिनी, जो हमने इंट्रोड्यूस किया था, जो जिसको बहुत प्यार मिला है. 8.5 ग्राम्स, बस 30 कैलोरीज की छोटी भूख आफ्टर मील के लिए. इसको हम श्योरली जल्दी से जल्दी हम ऑनलाइन चैनल पे अमेजोन पे लॉन्च करेंगे. सो प्लीज कीप लुकिंग एट आवर चैनल ऑन आवर ब्रांड पेज, ताकि ये कब लॉन्च करते हैं. सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट हमको जो मिला कंज्यूमर से, लोगों को इसको गिफ्ट करने का बहुत शौक है. मतलब लोगों को ये गिफ्टेबल लगता है. अपनी दादियों को गिफ्ट किया है, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया है, अपने बच्चों को गिफ्ट किया है. तो हमने वहाँ से क्लूज लेते हुए आई थिंक हमको भी हमने, सो आई वुड रियली लाइक टू एम्फेसाइज, गिफ्टिंग की दुनिया में हम लोग सब ये बात से वाकिफ रखेंगे कि हमारे घर में अभी हर फेस्टिवल पे या तो चॉकलेट्स आती हैं या एकदम शुगर लोडेड मिठाई आती है, और हम सब वो ऐसे आती है और इधर पास कर देते हैं. हम लोगों में से कोई भी उसको खाना ही नहीं चाहता, बट स्टिल हम लोग वो जाके वो मिठाई सामने दे. हाँ. हम जिनसे प्यार करते हैं उनको जाके शुगर यानी वो वाइट पॉइजन ही गिफ्ट कर रहे हैं. सो आई थिंक हाई टाइम की हम वो नेचुरल अपनी जो अर्ज है, जिसमें हम केवल फाइनली किसी के घर जाते हैं तो मिठाई का डब्बा उठा के लेके जाते हैं, उस अर्ज को अब थोड़ा कॉन्स्टेंटली सोचें कि हम क्या गिफ्ट कर रहे हैं. इफ आई गो बैक इनटू हिस्ट्री, आई थिंक पहले कहीं और जाना ही नहीं, बाहर ढूंढना भी नहीं है, शायद दादी के पास ही सोल्यूशन था. दादी तो पहले घर के हाथ के बने लड्डू ही लेके जाती ताकि सामने वाले को न, तो वो प्यार का सच्चा इजहार है कि आप लड्डू लेके जाइए, लड्डू बार लेके जाइए. इसलिए हमने बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट पैक्स क्रिएट किए हैं. इस राखी पे जब आप अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को, अपने फैमिली में कोई बॉक्स भेज रहे हो, तो आप दादी माँ का प्यार ही भेज सकते हैं. सो विद लव फ्रॉम मदर्स ऑफ इंडिया एंड ग्रैंड मदर्स ऑफ इंडिया, प्लीज पिक अप लड्डू बार and you will soon find an exciting range of gifting on Amazon as well, which will go live with. That's lovely to know. आपकी insight इतनी अच्छी लगी मुझे कि आपने बताया कि अगर हम वो चीज़ खुद नहीं खाते हैं तो हम उसे सामने किसी loved one को कैसे gift कर सकते हैं. Correct. And उसके लिए the gift box I feel like is an ideal solution. And coming back to Prime Day again, so what are the offers, Yash? So I think our team has curated very special offers for the team. So in fact, जब तक ये live stream भी चल रहा है, you can really grab लड्डू bars for a almost steal deal. Generally हम विश्वास नहीं करते, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते नहीं as a brand, primarily because we focus on giving the best quality to our customers. But आज आप लोगों ने समय दिया, आप लोग हमको सुन रहे हैं, तो आई थिंक इसके लिए जो भी आज इस चैट में जितने भी लोग हैं उन सबको I will request कि please go through the offers. Up to 20% you may get a steal deal, and even after this stream for next 24 hours there will be steal deals which will be available, जो आपको कभी ऐसे आसानी से मिलने नहीं वाली है हम लोगों के ब्रांड से, again because they are so focused, और it is really amazing at the love we getting from our customers. Thank you so much, Ash. We love the offers and we will definitely check it out.
And thank you so much for your time for this beautiful deep dive into what is Mama Nourish or a Laddu bar or Aapki Puri journey. Thank you so much for watching, and thank you, Yash. Thank you to each of our viewers who have been joining and have been a lovable audience on that side. Thank you, Lakshita, for your time as well. Thank you so much. वो मेरे विजन में आ ही नहीं रहा है